Hello friends, welcome back to the series of lectures. This is the 45th lecture of the series of CPC. Now in this lecture we would start with counterclaim or rate rule 6A. Read, a defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set off under rule 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff, any right or claim in respect of a cause of action occurring to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of a claim for damages or not, provided that such counterclaim shall not exceed the pecuniary limits of the jurisdiction of the court. फिर से पढ़िएगा. They are saying a defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set off, means the defendant already has the right to plead set off, means set off के अलावा he can also go for counterclaim. A defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set off under rule 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff, any right, that is important, they are saying any right or claim in respect of a cause of action. अब the word any right means what? अब देखो, in set off it is ascertained amount, in set off it is legal set off it is a certain amount, and also the original suit should be a money claim in the legal set off. Even in equitable set off also the original suit should be a money claim, but here original suit should be a money claim ऐसा कहीं नहीं लिखा है, and the counter claim can be any right, and therefore it is not essential that it should be a money claim. तो इसको आप लिख लो, write down. Right. In order 8 rule 6A, it is clearly provided that the counter claim can be for any right or claim, and also it is not provided that the original suit should be for a money claim, and therefore, unlike set off in counter claim, the original suit as well as the counter claim can be for any right, that is any cause of action, but not necessarily money claim. ठीक, अब आगे चलिए. The set off under rule 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff, any right or claim in respect of a cause of action. अब cause of action कब arise होना चाहिए, that is provided here. The cause of action occurring to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit. तो पहला तो लिखा है that the cause of action or counterclaim should have arisen, that the counterclaim or cause of action should have arisen, the cause of action of counterclaim should have arisen. तो पहला तो लिखा है that before what, before the original suit या फिर after the original suit. Before the original suit was filed, or even if it arises after the original suit is filed, either before or after filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense. Either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense. What that mean? मतलब अगर सूट के बाद भी अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जब सूट के पहले हुआ देन तब तो यू कैन क्लेम, लेकिन अगर सूट के फाइल होने के बाद भी अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, then also they are saying, they are putting a limitation upon that it should have arisen before what? That it should have arisen before what? Before the WS. It should have been arisen before the written statement is filed. Either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense, or before the time limited for delivering
हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड। मीन्स या तो WS फाइल करने के पहले, या फिर दे आर सेइंग बिफोर टाइम लिमिटेड फॉर WS हैज एक्सपायर्ड। बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर WS हैज एक्सपायर्ड। अब ये तो बाकी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई हैं कि सूट के पहले अगर अराइज हुआ था काउज ऑफ एक्शन तो काउंटर क्लेम कर सकते हैं, और सूट के बाद में हुआ लेकिन रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले हुआ है तब भी आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इसका क्या मतलब हुआ? दे आर सेइंग आइदर बिफोर द WS और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर WS हैज एक्सपायर्ड। Before the time limited for WS has expired. Now you see that original time is 30 days. Original time for filing WS is 30 days. अब उसके बाद the court may extend the time 35 days, 40 days या 60 days, whatever. अब कोर्ट ने जो एक्सटेंड किया है टाइम, एक्सटेंशन के बाद मान लो आपको 60 दिन का एक्सटेंशन मिला, इन टोटल 30 डेज था और 30 मोर डेज मिल गया, तो 60वां दिन अगर 60th डे अगर है तो 60th डे के पहले भी अगर काउज ऑफ एक्शन अराइज होगा देन यू कैन व्हाट गो फॉर काउंटर क्लेम। अब मान लो कोर्ट ने फर्दर एक्सटेंशन करके 90 डेज कर दिया, तो 90th डे के पहले अगर काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है देन यू कैन गो फॉर दैट क्लेम। So that is the meaning of this. So this part is before the filing of the WS. यहाँ पर we are presuming that you are filing the WS within the 30 days period. ठीक, लेकिन here we are talking about अगर 30 days में फाइल नहीं कर पाया तो the time has been expended। तो एक्सपेंशन के बाद जो टाइम कोर्ट ने कहा है अलाउ किया, तो उसके पहले भी अगर काउज ऑफ एक्शन अराइज हो गया then also you will be able to free claim the counter claim। अब इसमें एक केस लिख लीजिए आप ऑन दिस पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, इस लास्ट वाले पॉइंट पे एक केस लिख लीजिए आप, दैट इज शांति रानी दास देवांजी वर्सेस दिनेश चंद्र दे, 1997 सुप्रीम कोर्ट। शांति रानी दास देवांगी वर्सेस दिनेश चंद्र दे, 1997 सुप्रीम कोर्ट। शांति रानी दास देवांगी वर्सेस दिनेश चंद्र दे, 1997 सुप्रीम कोर्ट। राइट डाउन इन दिस। इसमें ऐसे लिखवा देता हूँ, द लास्ट पार्ट अबव रेफर्स टू। इट मीन्स आप एग्जाम में मत लिखना लास्ट पार्ट अबव रेफर्स टू, आप पूरा वो पार्ट लिखना इन्वर्टेड कॉमास में, बिफोर टाइम लिमिटेड फॉर WS हैज एक्सपायर्ड मीन्स या refers to the extended time for filing the WS as granted by the court, as allowed by the court, and therefore if the defendant has filed the WS within the initial 30 days period, then the cause of action for counterclaim should have arisen before that, and if it was not filed within 30 days and the court extended the time under Order 8 Rule 1, then if cause of action arose before the extended time, before the extended time means what? Before the last day of the extended period, then also the counterclaim can be made। ठीक, मान लो इस डेट पर A वर्सेस B ओरिजिनल सूट फाइल हुआ, on this date A versus B original suit has been filed। अब cause of action of counterclaim arises before this, तब तो आप क्लेम कर ही सकते हो काउंटर क्लेम। लेकिन मान लो इसके बाद अराइज हुआ है, अब विद इन 30 days of the service of the summon WS has been filed, WS was filed, then the cause of action should have been arisen after the suit but before the filing of the WS। तो इस बीच में भी अगर डिफेंडेंट को कॉज ऑफ एक्शन मिल गया है, ही कैन मेक अ काउंटर क्लेम। ठीक, बट सपोज द WS हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन 30 days, देन द कोर्ट विल एक्सटेंड द टाइम
सपोज दिस इज द एक्सटेंडेड पीरियड विद इन 90 डेज तक तो एक्सटेंड हुआ। तो सपोज दिस इज द एक्सटेंडेड पीरियड। अब सपोज कोर्ट ने सिर्फ 75 डेज दिया इन टोटल, 30 + 45 मोर, या फिर कोर्ट ने 90 डेज दिया टोटल, मान लो 60 + 30। तो दैट इज वेयर लास्ट डे ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड। तो उसके बीच में भी अगर कहीं कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, देन ऑल्सो द काउंटर क्लेम कैन बी मेड। अब ये जो लास्ट पार्ट लिखा है उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब वो कहते हैं बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, तो बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट जब आप 30 डेज में फाइल करते हो तब भी आ जाएगा, और एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर फाइल करोगे तब भी आ जाएगा। सो द वर्ड्स बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट वुड हैव बीन सफिशिएंट। तो आप एक्सटेंडेड पीरियड में फाइल करो तब भी बिफोर दैट, और अगर आप 30 डेज में फाइल करो तब भी बिफोर दैट द cause of action should have arisen. But just make it more clear, just to make it more clear they are saying कि WS जिस दिन फाइल होगा उस दिन के पहले the cause of action of counterclaim should have arisen if it arose after the filing of the original suit, and if not then जो extended period है उसका जो एक्सपायरी है लास्ट डेट, उसके पहले अगर cause of action अराइज हुआ है। अब वी आर प्रिज्यूमिंग दैट लास्ट डे पर WS फाइल हुआ है, मान लो एक्सटेंडेड पीरियड यहाँ तक है सपोज, और WS फाइल हो गया यहाँ पर। तो बताइए इसके पहले अराइज होना चाहिए या फिर इसके बाद भी हो गया तब भी चलेगा। तो द रूल इज कि WS जिस दिन फाइल किया तुमने उसके पहले अराइज होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन। So if the cause of action arises after filing the WS, suppose the court extended the period till the 90 days, but the defendant files the WS on the 80th day only. अब एक्सटेंडेड पीरियड है 90 डेज का, मान लो उसने पहले ही एक्सटेंशन ले लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता तो ये है कि WS फाइल करने के लिए आप टाइम मांगोगे कि मेरा टाइम एक्सपायर हो गया तो मुझे इतने दिनों का परमिशन दे दो, लेकिन मान लो उससे पहले ही उसने 90 डेज का एक्सटेंशन ले लिया। अब उसका 90 डेज का एक्सटेंशन है लेकिन ही फाइल्स द WS ऑन द 80th डे, फिर इन दैट केस द कॉज ऑफ एक्शन शुड हैव अराइजन बिफोर द 80th डे। तो अगर कॉज ऑफ एक्शन 80th और 90 डे के बीच में अगर अराइज करेगा तो उसके लिए आप काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते। तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट कि एक्सटेंडेड पीरियड के लास्ट डे पर आपने WS फाइल किया है। तो जैसे 90 डेज का पीरियड है तो आपने 90th डे पर फाइल किया, तो उसके पहले किसी भी दिन अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए देन यू कैन क्लेम द काउंटर क्लेम। ठीक, I am just repeating once again. Let's see again. So this is the date when the suit is filed. This is the date when the cause of action arose. तो इसके लिए आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो सबको क्लियर है। अब सूट फाइल होने के बाद WS is to be filed within 30 days। अब इस बीच में अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो इसको भी आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर WS आपने 30 डेज में फाइल नहीं किया and he wants an extension, so the last date when you file the WS, presuming that the WS is filed in the last date of the extended period, तो इस बीच में भी अगर आपका cause of action अराइज हुआ है then also you would have the counter claim। अब extended period suppose goes up till here, extended period is up till here and WS was filed before that, तो ऑब्वियसली इस बीच में जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड इज अप टू दिस एंड WS इज फाइल्ड हेयर, तो इस बीच में जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा तो उसके लिए यू कैन नॉट फाइल द काउंटर क्लेम। सो द काउंटर क्लेम कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज बिफोर द फाइलिंग ऑफ द WS। देखो मान लो एक्सटेंडेड पीरियड यहाँ तक है, एक्सटेंडेड पीरियड यहाँ तक है और WS फाइल ही नहीं हुआ, देयर इज नो WS फाइल टिल द लास्ट डे ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड। तो देयर इज नो WS फाइल टिल द लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड। तो कुड यू फाइल काउंटर क्लेम कर सकते हो कि नहीं। तो देखो
keep in mind that you can always file the counter claim जब WS फाइल होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि काउंटर क्लेम आप तभी कर सकते हो जब WS फाइल होगा। विदाउट WS यू कैन नॉट फाइल द काउंटर क्लेम। विदाउट WS यू कैन नॉट फाइल द काउंटर क्लेम। तो ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकता कि एक्सटेंडेड पीरियड था, उसका लास्ट डे आ गया और वो डे भी एक्सपायर हो गया। एक्सटेंडेड पीरियड था, लास्ट डे आ गया और वो डे भी एक्सपायर हो गया और आपने WS फाइल नहीं किया, तो उसके पहले अगर काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो आप काउंटर क्लेम कर लो, बिकॉज काउंटर क्लेम इज ऑलवेज कंडीशनल अपॉन द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। काउंटर क्लेम इज ऑलवेज कंडीशनल अपॉन, और सिर्फ काउंटर क्लेम नहीं, सेट ऑफ ऑल्सो। अब इसमें एक केस आपको बताऊंगा जिसमें आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया ही नहीं और आप कहते हो कि मुझे काउंटर क्लेम या सेट ऑफ करना है, तो दैट इज नॉट परमिसिबल। सो इट हैज टू बी अलोंग विद द रिटन स्टेटमेंट। तो आप इसको लिख लो, राइट डाउन द नेम ऑफ द केस, रमेश चंद, राइट डाउन रमेश चंद अर्धवाटिया वर्सेस अनिल पंजवानी 2003 सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट डिलीवर्ड बाय RC लोहाटी जस्टिस। AR अर्धवाटिया, ARDAWATIYA and versus अनिल पंजवानी, PANJAWANI। ठीक, तो इसमें लिखो, it was held that a defendant cannot make a counterclaim unless he has filed his written statement. ठीक, the same rule will apply with set off also. अब इस केस में हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सूट फाइल हुआ और WS का डेट निकल गया। WS was not filed. अब thereafter what? The court went for ex parte proceedings. Order 8 Rule 10 में करेगा ना कोर्ट, जब भी it will pass the judgment, it will go for the plaintiff's evidences. So court went for ex parte proceedings. अब उस दौरान this defendant applies for amendment of pleadings. जब ट्रायल शुरू हो गया तो डिफेंडेंट कहता है I want to amend my pleadings and I want to counter claim। समझ गए? अब देखो प्लीडिंग्स कहाँ है डिफेंडेंट की जो वो अमेंड करेगा, तो ही सेज दैट आई वांट टू अमेंड माय प्लीडिंग्स एंड आई वांट टू काउंटर क्लेम। अब द कोर्ट आस्क्ड हिम दैट वेयर इज योर प्लीडिंग, WS तो तुमने फाइल नहीं किया और काउंटर क्लेम करने चले, तो हाउ इट विल अलाउ? तो दैट एटीट्यूड यू कीप इन योर माइंड कि अनलेस यू फाइल योर WS देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अमेंडिंग योर प्लीडिंग। जब प्लीडिंग फाइल ही नहीं किया, then where is the question of amendment? The court held unless you filed the WS or set off. अब इस केस में it was counter claim, but the same rule applies for the set off also. The counter claim will not be allowed. Now is that fine? तो इसको लिख लो आप, that in this case defendant has not filed the WS and he wanted to amended his pleading to claim the counter claim, and that is not allowed because there has to be some pleadings for the purpose of amending the pleadings। ठीक, तो इधर तो मैंने 90 डेज बताया था, बट 90 डेज के बाद 10 दिन का एक्सटेंशन या जो भी एक्सटेंशन मिला, वॉट एवर बी द एक्सटेंशन, बट द काउज ऑफ एक्शन शुड अराइज बिफोर द एक्सटेंशन एंड बिफोर फाइलिंग ऑफ द WS। देन यू रीड फर्दर whether such counterclaim is in the nature of a claim for damages or not। So that is basically explaining that it can be any kind of cause of action. It is not necessarily to be a claim for damages. The counter claim can be anything. For example, the husband files a divorce petition और वाइफ ने काउंटर क्लेम कर लिया that I want the restitution of conjugal right, या फिर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का सूट किया और वाइफ ने डिवोर्स क्लेम कर लिया, डिवोर्स का काउंटर क्लेम कर लिया। So it can be any kind of cause of action which is permissible as counterclaim. So it is not only the money claim. It can be anything apart from the money claims also. ठीक, and provided that such counterclaim shall not exceed the pecuniary limits of the jurisdiction of the court.
तो ये तो सेम पॉइंट है एज ऑफ द सेट ऑफ, एज वी रेड इन द सेट ऑफ, सेम पॉइंट है कि आपका काउंटर क्लेम कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर सकता. देन फर्दर सब क्लॉज 2, such counterclaim shall have the same effect as a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit. तो ये आप पढ़ चुके हैं सेट ऑफ में. Such counterclaim shall have the same effect as a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit both on the original claim and on the counterclaim. So there is the same as of set of that both the claims, original suit and the counterclaim, will be a part of the same suit, a single judgment will be pronounced, but the court will pass the order for both. The court will pass the order for original suit and the counterclaim also in the same judgment. लेकिन दोनों के लिए अलग अलग डिक्रीज ड्रॉ की जाएंगी. The decrees will be two. One decree is for the original suit and other decree will be for the counterclaim. तो ये सेट ऑफ में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको. Then the plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court. तो plaintiff obviously, तो set off याद करो आप. अब this is A versus B. अब B makes a counterclaim. अब this counterclaim will be deemed to be a plaint and therefore now the A will be considered to be a defendant and he will file his written statement. अब वैसे तो ऑर्डर 8 रूल 1 सेज रिटन स्टेटमेंट के लिए सेज, रिटन स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर 8 रूल 1 सेज दैट यू हैव 30 days एक्सटेंडेबल टू 90 days, बट यहाँ पर दे आर लिमिटिंग दैट विद इन द पावर्स ऑफ द कोर्ट, मीन्स यू विल फाइल द रिटन स्टेटमेंट इन एज मैनी नंबर ऑफ डेज एज द कोर्ट अलाउज. तो लिखा है उसमें the plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court. तो यहाँ पर खास करके काउंटर क्लेम में that 90 days वाला concept will not apply. It is for the court to decide as how much time to be given to the plaintiff to file the written statement. और अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, कोई डेट फिक्स नहीं किया, देन ऑब्वियसली इट इज 30 days एक्सटेंडेबल टू 90 days. इफ द कोर्ट नॉट गिवन एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द टाइम, so he can file the WS within 30 days extendable to 90 days, but the court can fix it some lesser period. 30 days से कम तो नहीं करेगा, but it can be 40 days, 50 days, 60 days, whatever. That power will be with the court. तो इसको पढ़ लो. The plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court. So the court will fix. If the court does not fix, then obviously Order 8 Rule 1 will apply. Then the counterclaim shall be treated as a plaint and governed by the rules applicable to the plaints. The counterclaim shall be treated as a plaint and governed by the rules applicable to plaints. And therefore the written statement will be a written statement and it is governed by what? Order 8. ठीक, बस ऑर्डर 8 का जो रूल 1 है उस पर लिमिटेशन लगा रहे हैं, that the court has the discretion to grant you any fixed time, otherwise all the pleadings, the rules of pleadings will apply. ठीक, तो बस आपको मेन पॉइंट आपको ये देखना है कि काउज ऑफ एक्शन कब अराइज होना चाहिए, और काउंटर क्लेम में आपको किसी भी तरह के काउज ऑफ एक्शन पर काउंटर क्लेम करने का राइट है. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ओरिजिनल सूट बी अ मनी सूट एंड इट इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी दैट द काउंटर क्लेम शुड बी अ मनी क्लेम. ऐसा कहीं नहीं लिखा. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ काउज ऑफ एक्शन. देन यू फर्दर सी, मान लो ए ने बी के खिलाफ किसी प्रॉपर्टी के लिए डिक्लेरेशन प्लस पोजेशन का सूट किया. अब ये मकान है, मकान का नंबर 1 कर लो. हाउस नंबर 1 के लिए ए ने बी के खिलाफ डिक्लेरेशन प्लस पोजेशन का सूट किया. अब बी चाहे तो इसी में काउंटर क्लेम कर सकता है. इसमें भी दूसरा मकान हाउस नंबर 2 के लिए
दूसरे मकान हाउस नंबर 2 के लिए पोजेशन और डिक्लेरेशन का सूट कर दिया। कैन ही डू दैट? तो ए के पास एक मकान है जो बी क्लेम कर रहा है और बी के पास एक मकान है जो ए क्लेम कर रहा है, और दोनों अलग अलग मकान है। So there are two distinct houses, so there are two distinct cause of action. So A claims the possession and declaration of house 1 and B as having another cause of action with respect to house number 2. So B can always counterclaim that. So counterclaim में there is no limitation. अब कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट कैन ऑर्डर अ सेपरेशन ऑफ ट्रायल. कोर्ट हैज द पावर टू ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ ट्रायल. तो वो आगे पढ़ोगे आपको मिल जाएगा. अब मान लो तुमने कोई दो ऐसे काउज ऑफ एक्शन को जोड़ दिया विच में कॉम्प्लिकेट द सूट, देन द कोर्ट हैज द पावर ऑफ टू ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ ट्रायल, बट अदरवाइज द पार्टी हैज अ राइट टू क्लेम एनी काइंड ऑफ काउज ऑफ एक्शन एज अ काउंटर क्लेम. पार्टी हैज अ राइट टू क्लेम एनी काइंड ऑफ काउज ऑफ एक्शन एज अ काउंटर क्लेम. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड इन दैट. तो इसको भी लिख लीजिए आप, राइट. The party has a right to claim any kind of cause of action as a counterclaim, and there is no restriction provided in that. And there is no restriction provided that, accepting that the court can separate the trials. Accepting that the court can separate the trials. Now see the next one, 6b. Where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting a right of counterclaim, he shall in his written statement state specifically that he does so by way of counterclaim. अब रिटन स्टेटमेंट में जहाँ पे आप ओरिजिनल प्लेंट का जवाब दे रहे हो वो अलग है, लेकिन जैसे ही आप काउंटर क्लेम के प्लीडिंग्स करोगे तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दैट द फॉलोइंग प्लीडिंग्स आर बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम एंड यू हैव टू डिपॉजिट द कोर्ट फीस ऑल्सो फॉर द काउंटर क्लेम. ठीक. So where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting a right of counterclaim, he shall in his written statement state specifically that he does so by way of counterclaim. ठीक. अब नेक्स्ट वन. ठीक. So the point is that you cannot mix up the issues. तो आपने जो ओरिजिनल सूट के जवाब में जो लिखा वो अलग होना चाहिए और जो काउंटर क्लेम में आपने लिखा वो अलग होना चाहिए. So you must state your, जैसे आप प्लेंट बनाते हैं वैसे ही आपको काउंटर क्लेम बनाना पड़ेगा, लेकिन वो रिटन स्टेटमेंट के साथ ही फाइल होगा या फिर बाद में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स करके रिटन स्टेटमेंट में जोड़ा जा सकता है, but that will be a part of the written statement only, and therefore you must be clear as to which part of the written statement is about counterclaim. Now next, where a defendant sets up a counterclaim and the plaintiff contends that the claim thereby raised ought not to be disposed of by way of counterclaim. Where a defendant sets up a counterclaim and the plaintiff contends that the claim thereby raised ought not to be disposed of by way of counterclaim, but in an independent suit, the plaintiff may at any time before issues are settled in relation to the counterclaim apply to the court for an order that such counterclaim may be excluded, and the court may on the hearing of such application make such order as it thinks fit. Where a defendant sets up a counterclaim and the plaintiff contends that the claim thereby raised ought not to be disposed of by way of counterclaim but in an independent suit. Why? Because that may delay the proceedings, the plaintiff may get affected. वो जो सूट है जो प्लेंटिफ ने किया है काउंटर क्लेम के डिसाइड होने के बाद ही तो डिक्री पास होगी, दैट मे डिले द ट्रायल और दैट मे कॉम्प्लिकेट द इशूज, and therefore the plaintiff may make a prayer despite counterclaim
that you separate the trial. And if the court finds that it is proper in the interest of justice for a speedy trial, etc., then the court may order a separation of trial. The court may order separation of trial. So the plaintiff may at any time before issues are settled in relation to the counterclaim apply. So issues are settled in relation to the counterclaim. तो ओरिजिनल सूट के इशूज की बात नहीं हो रही. काउंटर क्लेम जो किया उसका जो इशूज सेटल होगा, काउंटर क्लेम जो किया उसका जो इशूज सेटल होगा, उसके पहले आप कभी भी एप्लीकेशन डाल सकते हो. उसके पहले आप कभी भी एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉर अ सेपरेशन ऑफ ट्रायल एट एनी टाइम before issues are settled in relation to the counterclaim. Apply to the court for an order that such counterclaim may be excluded, and the court may, on the hearing of such application, make such order as it thinks fit. Then, if in any case in which the defendant sets up a counterclaim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued, or dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with. So that is very important. You see, मान लो A ने B पर सूट किया, अब सूट इज गोइंग ऑन, अब इधर से काउंटर क्लेम भी आया B वर्सेस A, देयर इज अ काउंटर क्लेम. अब फॉर सम रीजन द ओरिजिनल सूट है दैट हैज बीन सपोज विदड्रॉन, मतलब A ने अपना ये सूट विदड्रॉ कर लिया. ऑर्डर 23 में A हैज विदड्रॉन हिज सूट, ओरिजिनल सूट, या फिर मे भी किसी टेक्निकल ग्राउंड पर ओरिजिनल सूट विल डिसमिस्ड, मतलब किसी तरीके से ये जो ओरिजिनल सूट है दैट इज डन अवे विद, either it is dismissed or withdrawn, etc. अब what will happen to the counter claim? Because उस काउंटर क्लेम का जो फाउंडेशन था दैट वाज ओरिजिनल सूट. जैसे मैंने आप पर सूट किया तब तो आपने मेरे ऊपर काउंटर क्लेम किया, अब मेरा जो सूट था मैंने वो विड्रॉ कर लिया, आपने अपना काउंटर क्लेम विड्रॉ नहीं किया. तो ओरिजिनल सूट के ख़त्म हो जाने के बाद भी क्या काउंटर क्लेम चलाया जा सकता है? अब देखो, काउंटर क्लेम जब एक बार क्लेम कर दिया आपने, कोर्ट फीस डिपॉजिट कर दिया, देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट what happens to the original suit, the counter claim will continue. So that is what they are stating here, that even if the original suit is withdrawn or dismissed, the counter claim will continue. हाँ, if counter claim वाला जो पार्टी है, he can withdraw his counter claim, that is a different thing. But if he does not withdraw, then the original suit का withdraw का असर कुछ भी नहीं होगा. The counter claim will still continue. If you read it again, if in any case in which the defendant sets up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed. तो discontinued का मैंने एक एग्जांपल दिया, withdrawal. अब मान लो सेम the suit is stayed for some reason, मान लो वो सेम सूट कहीं और पेंडिंग है. मान लो ये जो ए ने ए वर्सेस बी जो सूट किया है, ये किसी और कोर्ट में ए वर्सेस बी पेंडिंग है, हो सकता है, तो इसमें रेस सब जुडिस सेक्शन 10 लग जाएगा और ये सूट जो है ये विड्रॉन हो जाएगा. दिस सूट विल बी विड्रॉन नहीं, सॉरी, स्टेड, ये सूट स्टे हो जाएगा. दिस सूट विल बी स्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस सब जुडिस. फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो ए हैज already filed a suit against B for the same matter. For the same matter, he again filed a suit against B, and in this suit, B makes a counterclaim. Of the fact that this suit is pending already before the other court is brought to the notice of this court. Will not the court stay this proceedings? Section 10. अब Section 10 में stay कर दिया, ठीक. सेक्शन 10 में इट हैज बीन स्टेड, सेक्शन 10 में दैट हैज बीन स्टेड, लेकिन काउंटर क्लेम पे तो स्टे नहीं लगाया, तो ओरिजिनल सूट स्टे होगा बट द काउंटर क्लेम विल कंटिन्यू, एंड देयरफॉर इवन इफ द ओरिजिनल सूट इज स्टेड और डिसमिस्ड व्हाटएवर, द काउंटर क्लेम विल कंटिन्यू, बिकॉज द काउंटर क्लेम देन उस केस में इंडिपेंडेंट सूट बन जाएगा.
ओरिजिनल सूट खत्म हो गया, द काउंटर क्लेम विल स्टिल कंटिन्यू। हाँ, लेकिन अगर बी वांट्स ही कैन ऑलवेज विड्रॉ द सूट काउंटर क्लेम, so that is his discretion, but if he does not then the counter claim will continue। अब मान लो जो ये वाला सूट ए ने जो फाइल किया है दैट इज बार्ड बाई रेस जुडिकाटा, मान लो कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि ये वाला सूट बार्ड बाई रेस जुडिकाटा है क्योंकि पहले ही एक सूट डिसाइड हो चुका है, सो दैट सूट विल बी डिसमिस्ड, ओरिजिनल सूट विल बी डिसमिस्ड, it is barred by res judicata, then will the counter claim also be dismissed? The answer is no, because that is having an independent existence, because that will have an independent existence and that will be continued to tried. So for whatever reasons the original suit is given up, the counter claim will continue। ठीक, I hope you have note down this। फिर भी एक पॉइंट लिख लो आप, राइट डाउन। Original suit dismissed or stayed for any reason, original suit dismissed or stayed for any reason, counterclaim, comma, counterclaim is based upon an independent cause of action, hence it will continue। ठीक, समझ समझ में तो आ गया सेंटेंस में, मीन्स द counterclaim is based upon an independent cause of action and therefore that cause of action does not get affected, that will continue। ठीक, अब नेक्स्ट, तो सेट ऑफ में भी यही है, जो रूल यहाँ पर है सेट ऑफ में भी यही रूल लगेगा। ओरिजिनल सूट विड्रॉ भी हो जाए, स्टे भी हो जाए, सेट ऑफ विल कंटिन्यू, क्योंकि ये डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, तो दैट विल कंटिन्यू। अब नेक्स्ट, इफ द प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट इन पुटिंग इन अ रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम, if the plaintiff makes default in putting in a reply to the counterclaim made by the defendant, the court may pronounce judgment against the plaintiff in relation to the counterclaim made against him or make such order in relation to the counterclaim as it thinks fit। अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑर्डर 8 रूल 10 ऑलरेडी कवर्स दिस, फिर भी उन्होंने प्रिकॉशन के लिए लिख दिया। अब व्हाट हैपन्स इज, मान लो एक नॉर्मल सूट में ए ने सूट किया बी के ऊपर, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी एंड बी डब्ल्यूएस फाइल नहीं करता है। अब व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, तो ऑर्डर 8 रूल 10 लगेगा, either ex parte decree will be there or after hearing the ex parte decree will be passed or any other order, extension of time etc। तो उसी तरीके से in the case of the counter claim, A files a suit against B and B makes a counter claim। Suppose A files a suit against B and B makes a counter claim। अब in the counter claim A is supposed to be file the WS, but A does not file the WS। A is supposing to be file the WS, but A does not file the WS। अब उस काउंटर क्लेम के लिए आप B को प्लेंटिफ मानोगे कि नहीं और A को डिफेंडेंट मानोगे काउंटर क्लेम के लिए? तो काउंटर क्लेम में डिफेंडेंट A ने WS फाइल नहीं किया, तो A ने WS फाइल नहीं किया, तो द कंसीक्वेंस ऑफ ऑर्डर 8 रूल 10 वाला ही तो लगना चाहिए। ठीक, बिकॉज एज वी नो इसका जो काउंटर क्लेम है दैट विल बी ट्रीटेड एज प्लेंट, बी का जो काउंटर क्लेम है दैट इज बी ट्रीटेड एज ए प्लेंट एंड ए का जो रिप्लाई है दैट विल बी ट्रीटेड एज रिटन स्टेटमेंट एंड देयरफॉर ऑर्डर 8 रूल 10 शुड अप्लाई। तो उसी का स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ कर रखा है दैट इफ द रिटन स्टेटमेंट इज नॉट फाइल्ड देन द कोर्ट कैन पास द जजमेंट अगेंस्ट ए और मे बी द कोर्ट कैन गो फॉर दैन एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए फॉर काउंटर क्लेम और द कोर्ट कैन पास एनी अदर ऑर्डर like extension of time etc। So whatever written is same as order 8 rule 10। ठीक, if the plaintiff makes default in putting in a reply to the counterclaim made by the defendant, the court may pronounce judgment against the plaintiff in relation to the counterclaim made against him or make such order in relation to the counterclaim as it thinks fit। अब next one,
where in any suit a set off or counterclaim is established as a defense against the plaintiff's claim, and any balance is found due to the plaintiff or the defendant, as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such balance. अब यहाँ पर they are talking about money, कि काउंटर क्लेम मनी के लिए भी हो सकता है. तो सेट ऑफ तो सिर्फ मनी के लिए होगा, बट काउंटर क्लेम कैन बी फॉर मनी ऑल्सो. अब मान लो ए ने सूट फॉर डैमेजेस किया, ए ने सूट फॉर डैमेजेस फाइल किया बी के खिलाफ. अब बी ने काउंटर क्लेम कर दिया और उसमें भी काउंटर क्लेम में सूट फॉर डैमेजेस किया. इट इज नॉट असर्टेन्ड अमाउंट. अब असर्टेन्ड नहीं है तो सेट ऑफ नहीं होगा. ए फाइल्स अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सपोज अगेंस्ट बी. अब बी इन काउंटर क्लेम फाइल्स ए सूट फॉर क्लेमिंग डैमेजेस फॉर अ टॉर्ट. ठीक, तो दोनों ही मनी क्लेम है, बट neither of them is ascertained amount, and therefore it cannot be a case of set off. Set off के लिए it has to be an ascertained amount, but it is not ascertained, it is not set off, but it can still be a counter claim. So it is a counter claim. If it is a counter claim, then in that case दोनों का जो अमाउंट डिक्री होगा उसका म्यूचुअल एडजस्टमेंट करके whatever the larger amount, the decree will in his favor. Final decree will is in favor. समझ में आया? ठीक, तो counter claim can be for money also, and if it is a certain amount, then तो it will be set off. But if it is not a certain amount, then it can be counter claim. And therein जो पहले जो सूट था ओरिजिनल सूट, उसमें जो कोर्ट ने जो भी अवार्ड किया डैमेजेस, काउंटर क्लेम में जो भी मनी अवार्ड किया कोर्ट ने, दोनों का म्यूचुअल एडजस्टमेंट करने के बाद जिसके फेवर में बड़ा अमाउंट जाएगा, ही विल गेट द अमाउंट. ठीक, नाउ नेक्स्ट, द रूल्स रिलेटिंग टू अ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट shall apply to a written statement filed in answer to a counter claim. So that you already know कि ये जो A है, ये जो आपका रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा उस पर ऑर्डर 8 लागू होगा. तो तभी तो मैंने बोला कि ऑर्डर 8 रूल 10 तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा यहाँ पर. ठीक, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रिटन स्टेटमेंट, एंड देयरफॉर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट विल अप्लाई इन इट अपॉन इट. सो दैट्स ऑल फॉर काउंटर क्लेम. अब आगे हम देखेंगे डिफरेंस काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में, उस पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. बट फॉर दैट you came after revising all this and yourself make out some differences between them. We will continue that in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you.